let's do. Okay, so attestation engagement means when we have to give our opinion related to some subject matter. Okay, Yes. so we have examination, review and agreed upon procedure under attestation engagement. Okay, so we basically follow this SSA standard for these attestation engagement, include examination, review and agreed upon procedure on a subject matter or an assertion that is the responsibility of another party. So an examination basically result in an opinion, a review result in a conclusion, and agreed upon procedure result in some findings. Okay, so under examination, we give a higher level of assurance, that is a reasonable assurance. Whereas in review, we give limited kind of assurance, which is called conclusion. And under agreed upon procedure, we do not give any opinion, we just report our findings in the attestation report. Okay. So in an assertion-based examination and a direct examination engagement, the CPO obtain reasonable assurance. So as I told you that under examination, we give the reasonable assurance, which is a high level, but not an absolute assurance. Okay. So we give our assurance regarding the measurement or evaluation of underlying subject matter or subject matter information against the criteria. The objective is to obtain sufficient appropriate evidence in order to express an opinion whether the subject matter is in conformity with the criteria or whether the assertion is fairly stated. Okay, the objective is to gain sufficient appropriate evidences. Okay, you need to gain your evidences regarding the subject matter here. Okay, so whether your subject matter is in conformity with the criteria or whether it is like properly evaluate against the criteria, means your assertion is fairly stated or not. The practitioner should request from the responsible party a written assertion about the measurement or evaluation of the subject matter against the criteria. So in a review engagement, the objective is to obtain sufficient appropriate review evidences by performing uh, in an agreed upon procedure, the objective is to perform, sorry, in a review engagement, the objective is to obtain sufficient evidences. So you have to give here your limited assurance. So it means you only have to perform limited audit procedure, which are basic, not audit, basically your inquiry and your analytical procedure here together some evidences regarding your subject matter. So whether your subject matter needs some material modification or everything is okay. Okay, but in case of agreed upon procedure, as I told you, you do not give any opinion in this case. So you just have to like report your findings in your report. A specified party should agree and are responsible for the sufficiency of the procedure for their purposes. Okay, is it clear? So Yes, what it do you do in examination, review and agreed upon procedure? So next is your financial forecast and projections. So financial forecast and projections means when you basically do some modification to your financial statement based on certain scenarios. Okay, so if this will happen, then your financial number will look like this, or if that will happen, then it look like this. The information basically applies to the guidance practitioner should use when engaged to issue examination or agreed upon procedures. Report on prospective financial statement. A practitioner should not be named as an outside attest provider if he or she actively assisted in preparation of the prospective financial statement without appropriate independent safeguard. So prospective financial statement basically refers to your financial forecast or financial projections. Okay. So means when you are taking certain hypothetical assumptions or you are taking certain scenarios
So based on certain scenarios, you are making certain assumptions, certain scenarios, and you are using it to make your financial information. A financial forecast is basically a prospective financial statement that is the best of responsible party knowledge and belief an entity's expected final position. So as I told you that if these certain condition will happen or if it expect to exist, then this financial statement will look like this. So for example, आपकी कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ली और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या किया आपने, आपकी कंपनी क्या कर रही है, क्लाइंट कुछ लोन ले रहा है, लोन के कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है और उस इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर उसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई कि ये अगर ये ऐसा होगा तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ इस तरह की दिखेंगी. So this is basically your financial forecast, and financial projection is also that you are taking certain hypothetical assumption कि अगर आपको आप कल को ये चीज ले लेते हो तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ इस तरह की दिखेगी. So basically based on certain expectation or certain hypothetical assumptions, you are making your financial statement, and based on this financial statement you are engaging some practitioner to give an opinion on this financial statement or to do do review or to do agreed upon procedures. Okay, so hypothetical assumption is an assumption that is using in financial projection to present a condition or a course of action that is not necessarily expected to occur but is consistent with the purpose of the projection. Any doubt? No doubt. समझ रहा है. Okay. So your prospective financial statement can either be for general use or for limited use. So basically, when your prospective financial statement basically used by anyone, like if it is for general purpose, so basically your financial forecast is appropriate in case if you are using it for general use. Okay. Limited use means when you are restricting this financial information only to certain specific parties to whom your responsible party is negotiating directly. So in this case, your financial forecast or financial projection both can be appropriate. Okay. Your financial forecast is for your general use, whereas your financial projection is always for limited use. Okay. So remember these things. Okay. So because a final projection is not appropriate for general use, a practitioner should not consent to use the name of his or her name in conjunction with the financial projection that it is believed will be distributed to those who will not be negotiating directly with the responsible parties. So because a financial projection is not appropriate for general use, since this financial projection is not for your general use, it is always limited to the specific parties. So you should not consent to use his or her name in conjunction with the financial projection that it is believed will be distributed to those who will not negotiating directly with the responsible parties. So that means the parties who are not basically specifically mentioned. So it is need to check that these financials should not be given to the other parties except for those who are negotiating directly with the responsible parties. Okay. So next you have to, like if you are performing a compilation of prospective financial statement has been moved from attestation to statement on standard for accounting and review services. So we already discussed that if you are engaged to perform the compilation, then this compilation comes under your SARS standard. Okay. So a practitioner should not attest on prospective financial statement that exclude disclosure of the summary of significant assumptions. So since these prospective financial statement are based on your assumptions, if that scenarios, and if these assumptions are not disclosed in your financial statement, then in that case you are not allowed to accept these kind of engagement.
You should not attest on financial statement that exclude either an identification of hypothetical assumption or a description of limitation on the usefulness of the presentation. Okay, so the standards, the following standards basically applies to an attestation of prospective financial statement and the resulting report. So what are the basic standards you apply to the prospective financial statement? First is the attest engagement should be performed by a person or a persons having adequate technical training and proficiency to report on the prospective financial statement. So if you are performing the attestation engagement, then in that case, it should only be performed by those who have knowledge about this, have some technical training and proficiency. Due professional care should be exercised in performance of attest engagement. So you need to be um, like you need to be careful when you are performing this engagement. The work should be adequately planned and assisted, if any, should be properly supervised. Okay, so when you are performing this engagement, you have to properly plan this engagement, you have to properly supervise this. Applicable procedure should be performed as a basis for reporting on prospective financial statements. The report should, based on the practitioner attestation engagement on prospective financial statement, should conform to the applicable guidance. Okay. The Yes. practitioner standard report on compilation of prospective financial statement in accordance with SAR standard. So we already talk about your compilation report. So when you perform compilation, then you have to give your report according to the SAR standard. And this report, you basically need to mention your identification of prospective financial statement presented by the responsible party. So whatever the like financials you are compiling, you have to mention their periods. You have to mention a statement that the practitioner has compiled. So you have to mention that the compilation has been performed, not any kind of audit or any kind of review you are performing. You have also have to tell that you are not giving any assurance. Okay, so under compilation, you do not give any assurance. You just issue a report. Okay, a caveat that the prospective result may not be achieved. So since these are based on the assumptions, so your assumptions can be like change in the future. So since future is your uncertain, so you need to mention it in your report that since future is uncertain, nobody knows what will actually happen in the future. So that means these assumptions may be subjected to change. So this information may be this result may be not be achieved in the future. Okay, so you need to mention this disclaimer in your report. A statement that the practitioner assumed no responsibility to update the report for event and circumstances occurring after the date of reports. So any event which are occurring after the date of report, it will not be the responsibility of the practitioner. Next, at last, you have to mention the practitioner's signature, city and state, and date of compilation report. Is it clear? Yes, it is clear. Okay. So next is your in examination of prospective financial statement is a professional services that involves the following. Okay. So under examination, we already discussed that you have to evaluate the preparation of prospective financial statement. So examination is a high level of assurance that you can give in attestation engagement. So under this, you have to evaluate the preparation of prospective financial statement. So how these financial statements are basically prepared, evaluating the support underlying the assumption. Okay, so what are the basic assumptions they are using, or like whether the basic information are spotting these assumptions or not. Evaluating the presentation of prospective financial statement for conformity with AICPA presentation guidelines. Then you have to issue an examination report. Is it clear? Yes. The practitioner standard report on an examination of prospective financial statement should include the following.
So under examination report, you have to first like include a title. Okay. So you need to include the title that it is an independent practitioner's report. Then you need to identify like which financial statement you are going to examine, like period to which they belongs. You need to indicate the criteria against which prospective financial statement was measured or evaluated. Okay. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप उसमें मेंशन करते थे कि आपने किस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये परफॉर्म किया है. सिमिलरली यू हैव टू मेंशन इट वट एवर द क्राइटेरिया दे आर यूजिंग. अगर वो गैप यूज कर रहे हैं, कोई और मेथड यूज कर रहे हैं, जैसे सब्जेक्ट मैटर है तो किसी और assumptions पर बेस्ड है, you have to mention that criteria. Then identification of responsible party. Responsible parties की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन करनी पड़ेगी आपको, जैसे आप मैनेजमेंट की मेंशन करते थे. ऐसी प्रैक्टिशनर की, जैसे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन करते थे, ऐसी यहाँ प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन करनी है. प्रैक्टिशनर ने कौन सा स्टैंडर्ड्स बेसिकली यूज किया, यू ऑल्सो हैव टू मेंशन. ठीक है, स्टैंडर्ड्स जो आपके प्रैक्टिशनर ने यूज किए हैं. Statement that the practitioner believes that examination provide a reasonable basis. Description of nature of examination engagement. Then practitioner opinion that the prospective are present in conformity with these guidelines or not. Or then, as I told you, that you have to mention the disclaimer that future may be, since future is uncertain, so these result may be subjected to change or may not be achieved. A statement that the practitioner assume no responsibility. So after the date of report, there is no responsibility with the practitioner to change this report. To identify the events. So next, आपकी signature, city, state, and date of examination report. So is it clear related to examination? हाँ क्लियर है. ठीक है. नेक्स्ट आएगा आपका प्रैक्टिशनर हु एक्सेप्ट द एंगेजमेंट टू अप्लाई एग्रीड अपॉन प्रोसीजर टू प्रोस्पेक्टिव शुड फॉलो द स्टैंडर्ड फॉर अटेस्ट एंगेजमेंट. सो अगर आप एग्रीड अपॉन प्रोसीजर करना चाहते हो इंस्टेड ऑफ एग्जामिनेशन, तो अगेन आपके स्टैंडर्ड्स वही रहेंगे अटेस्टेशन वाले. बस एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स में आपको क्या करना है, आपकी रिपोर्ट में आपको कोई ओपिनियन नहीं देना, जस्ट यू हैव टू रिपोर्ट द फाइंडिंग्स. यू हैव टू मेंशन द प्रोसीजर जो आपने फॉलो किया है और जो भी फाइंडिंग्स आपको मिली हैं. ठीक है. तो यू हैव टू मेंशन द प्रैक्टिशनर इज इंडिपेंडेंट. प्रैक्टिशनर एंड स्पेसिफाइड पार्टी एग्रीड ऑन द प्रोसीजर्स. Specified party take the responsibility for sufficiency of the agreed upon procedures. So you have to mention the responsibility of the specified party. Then summary of significant assumption. The prospective financial statement to which the procedure are to be applied are subject to reasonably consistent evaluation against the criteria that are suitable and available to the specified parties. Criteria to be used in determination of findings. So whatever the procedures you are following, whatever the criteria you are using, you have to mention. You have to report your findings wherever applicable. So as I told you that agreed upon procedures mainly जो report होती है आपकी restricted रहती है, क्योंकि procedures हर एक को नहीं पता. So you can restrict the report also to the specified parties. Okay. So this is all about your agreed upon procedures. Any doubt? No doubt. Next is your pro forma financial information. So what happens in pro forma? The objective is to show what the significant effect on the historical financial information might have been had a consummated or proposed transaction occurred at the earlier date. So what happened in your pro forma? Pro forma में क्या होता है कि आप कोई historical financial information उठाते हो और based on certain scenarios आप चेक करते हो कि क्या रिजल्ट निकलता अगर ये चीज हो जाती. सो फॉर एग्जाम्पल आपका कोई इवेंट आज हो गया, ठीक है, तो यू आर इवेल्युएटिंग कि अगर ये इवेंट आपका पास्ट में हुआ होता,
जैसे आपका कोई भी इवेंट हो सकता है कि कोई लॉस हो गया, कोई है ना आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर दी, कोई मर्जर हो गया, कोई एक्विजिशन हो गया, तो अगर वो पास्ट में हुआ होता तो उसका क्या इफेक्ट होता, उसे बोलते हैं हम प्रोफोमा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, कोई ट्रांजेक्शन कोई इवेंट अगर पास्ट में होता तो क्या रिजल्ट होते इंस्टेड कि जो अब करंट में हो गया। क्लियर? जैसे आपका कोई business combination, change in capitalization, disposition of significant portion, changes in form of business organization status, proposed sale of securities. So whatever the transaction or event is happening today, so what happen if it will happen in the past instead of today? Is it clear? बट जब हम ऐसे फाइनेंशियल्स क्यों बनाते हैं? क्या मतलब हम प्रोफोर्मा फाइनेंशियल्स क्यों बनाते हैं? ओके, सो देखो आपकी हर फाइनेंशियल्स का कोई ना कोई पर्पस है। सो हाँ, तो ये आपकी किस कोई ना पर्पस के लिए यूज होता है ऐसा? बताते हैं कि बेसिकली ये इवेल्युएट करने के लिए कि अगर कोई इवेंट पास्ट में हुआ होता तो उसका क्या इफेक्ट होता। ठीक है, सपोज कोई यस हाँ, बोलो बोलो। नहीं बताओ क्या होगा। नहीं नहीं, आप एक्सप्लेन कर रहे थे ना, कर लो तो मतलब। अच्छा, तो मैं कह रही थी कि लाइक कोई भी इवेंट जैसे मान लो कि कोई कैपिटलाइजेशन टेक्निक में चेंज आया, तो अगर वही चेंज हम लाइक पास्ट में चेक करें तो कितना इफेक्ट उसका बनता है। जैसे आपके ये जो ये बेसिकली किसी ना किसी पर्पस के लिए तो बनती है। आप जैसे आपके अदर सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन थी या आपकी वो थी, अभी आपने पढ़ा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल फोरकास्ट। सो ये बेसिकली आपकी किसी ना किसी पर्पस के लिए बनती है। जैसे आपकी ये फाइनेंशियल फोरकास्ट हो गए या वो सब हो सकता है कि बैंक से लोन लेना हो और आप ये दिखाना चाह रहे हो कि अगर लोन हमारा इतना है, लाइक ये चीज मिल गई तो हमारी फाइनेंशियल नंबर्स ये दिखेंगे। हाँ, बट ये सब तो फ्यूचर हो गया ना, फ्यूचर रिलेटेड प्रोजेक्शंस और सब। यस, तो वो आपकी फ्यूचर रिलेटेड था। प्रोफोमा में क्या होता है कि हम पास्ट की इंफॉर्मेशन उठा के करंट सिनेरियो के बेसिस पर उसे चेंज करके देख रहे हैं कि जैसे कोई बिजनेस कॉम्बिनेशन अगर हमने लास्ट ईयर किया होता तो व्हाट विल लाइक इफेक्ट इट विल हैव इंस्टेड जो ओके, इवेंट आज हो गया। ठीक है। Yes. So the objective is to achieve primarily by applying pro forma to the historical financial information. Pro forma adjustment should be based on management assumption and give effect to all significant effect directly attributable to the transaction or the event. Pro forma financial information should be labeled as to such to distinguish it from historical financial information. So मेंशन कर दिया आपको कि प्रोफोमा हम क्यों बेसिकली नेम यूज कर रहे हैं, ताकि लाइक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपकी करंट पास्ट कुछ भी हो सकती है। सो इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम हिस्टोरिकल financial information you are mentioning it as pro forma financial information. Okay, यस। the presentation of pro forma information should describe the transaction that is reflected in the pro forma data, the source of the historical financial information on which it is based, the significant assumption used in developing the pro forma adjustment, and any uncertainties about these assumption. So the presentation also should indicate that the pro forma financial information should read in conjunction with related historical financial information, and the pro forma financial information is not necessarily the indicative of the result that would have been attained had the transaction or the event actually taken place earlier. So as I told you did the basically your pro forma include your historical information which is like based on significant assumption used in which is basically subjected to the change based on certain transaction or event that is occurring in the current period, but you are putting this effect to the historical period that what will happen if it occur in the past. Okay, so if we talk about that examination, so if you are performing the examination
on pro forma financial statement. So under examination, you have to basically evaluate it, whether your management assumptions are basically correct or not, the related pro forma adjustment are mathematically correct or not, or your pro forma column reflect the proper application to the those adjustment to the historical financial information. So under examination, you have to give reasonable assurance. So you have to check whether the assumptions are correct or not, whether the uh, जो भी आपकी historical में changes किए हैं, whether they are mathematically applied correctly or not. Okay, so whether these basically reflect your proper application of these adjustment or not. Okay, whereas other than examination, you can perform the review procedures here. So please remember, for the projections and forecast, you perform examination or agreed upon procedures. But for the pro forma, you can perform examination or review, not agreed upon procedures. Okay. Yes. So under review, you have to give a negative kind of assurance. So whether the assumptions like do not provide a reasonable basis for presenting the significant effect directly attributed to the underlying transaction, the related pro forma adjustment does not give appropriate effect to those assumptions, or the pro forma column does not reflect the proper application of those adjustment to the historical financial statement. Okay. So you have to evaluate basically कि क्या आपकी कोई material modifications required है या नहीं है, कि कोई adjustment चाहिए या नहीं चाहिए. Is it clear? So हाँ. negative kind of assurance here. Okay, so other than procedure that is applied to historical financial statement, the procedure that the practitioner should apply to the assumption and pro forma adjustment are as follows. So when you are performing examination or review, what procedure you need? So you have to obtain the understanding of the underlying transaction. So जो भी आपका event या transaction हो रही है, you first need to understand these transaction. Then you have to gain certain knowledge of these each constituent part of the combined entity in a business combination that will enable the practitioner to perform the required procedures. Then you discuss with the management their assumptions regarding the effect of the transaction or event. Okay, you can first gain some understanding, then you can also discuss the management, you can do inquiry with them. You have to evaluate whether pro forma adjustment are included in all significant effect directly attributable to the transaction, कि जो भी adjustment की गई हैं, whether they are proper or not. You have to obtain sufficient evidence in support of such adjustment. You have to evaluate whether management assumptions that underlie the pro forma adjustment are presented in a sufficiently clear and comprehensive manner. You have to determine the computation of pro forma adjustment are mathematically correct and the pro forma column reflect the proper application of those adjustment to the historical financial statement. ओके कि आपके मैथमेटिकली करेक्ट है या नहीं, assumptions करेक्ट है या नहीं, applied करेक्ट है या नहीं. Also, you can take written representation from management also, like management representation letter. आप examination as well as review दोनों में ले सकते हो, जिसमें management आपको written acknowledgement देगी कि their responsibility regarding the pro forma, कि उनकी जो assumptions बनाई हैं या जो भी like adjustment की हैं, all the responsibilities of the management, they are giving you the written assertion about these responsibilities. Okay, हाँ. you can read the pro forma financial information and evaluate whether the underlying transaction, the pro forma adjustment, the significant assumption, and the significant uncertainties, if any, about these assumptions have been appropriately described. The source of the historical information on which the pro forma financial information is based has been appropriately identified. Okay. So is it correct? Oh, clear? हाँ, it is clear. Okay. So
Basically, if you are compiling this pro forma financial information, then again, in case of compilation, you have to follow the SARS standard. Okay. हाँ. So you need to be independent of the entity. You need to have understanding of the like framework they are using, the assumptions they are making. You, as an accountant, you have to apply your accounting and financial reporting expertise to assist management in the presentation of pro forma financial information and report that the information is in accordance with SARS without undertaking to obtain or provide any assurance on the pro forma financial information. Okay, so in case of compilation, you do not need to give any kind of assurance, as we mentioned you earlier. You need to obtain the agreement of management. You can take management agreement where management is acknowledging basically their responsibilities regarding this pro forma financial information. Management also must agree to include the following in any document containing the pro forma financial information: the financial statement of the entity for the most recent year, interim period historical financial information if interim period pro forma financial information is presented. In case of business combination, the relevant historical financial information for the significant part of your combined entity. Okay, so basically whatever your like on which your pro forma financial information is based, you need to have like written acknowledgement from the management where they are mentioning their responsibilities. Okay. Yes. Pro forma financial information must be based on historical financial statements that have been compiled, reviewed, or audited. Management must include those historical financial statement as well as a summary of significant assumption with any document containing the pro forma financial information. Okay. Yes. Management must obtain the accountant permission before including the compilation report in any document containing the pro forma, which indicate a compilation has been performed on such information. So, since your compilation report does not give any kind of assurance, so if management is including this compilation report in any document, then they need to take permission from the practitioner. Okay, so since people may rely on these report and may assume that management financial information is correct, but in case of compilation, since the practitioner is not giving any assurance, he is not taking any responsibility, so that means you need to take permission when you're including these kind of report in any documents. Okay, so as we already discussed about examination, so under examination, what how does the report look like? So basic things are same. You need to have proper title and toll, then you need to obtain understanding of the applicable financial reporting framework, significant accounting policies intended to be used in the preparation, including those of the significant constituent part of the combined entity. You need to mention the like whatever the standards you are basically following. Pro forma are based on which kind of like criteria, assertions. आपकी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी, प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी, सॉरी, प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी. ठीक है. हाँ. एग्जामिनेशन के केस में यू मेंशन दैट यू आर गिविंग द रीजनेबल एश्योरेंस व्हिच इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस. सो आपकी बेसिकली रिपोर्ट सिमिलर रहती हैं जैसे एग्जामिनेशन की क्या रहेगी, रिव्यू की क्या रहेगी. हाँ. बस आपका मैटर चेंज होता रहेगा, जैसे आप प्रोफोमा में आपने क्या इंक्लूड करना है और उसमें क्या इंक्लूड करना है. अब जैसे आपकी असर्शन बेस्ड एग्जामिनेशन है. असर्शन बेस्ड का क्या मतलब है कि जब आपको रिटर्न असर्शन मिलती है कि यस, बेसिकली आपकी रिस्पॉन्सिबल पार्टी आपको रिटर्न में असर्शन देके चलती है कि मैंने
ये सब्जेक्ट मैटर को इस क्राइटेरिया के अगेंस्ट इवेल्युएट कर रखा है, तो आप ये बताओ कि क्या मैंने सही किया है या गलत किया है। क्लियर? सो उस केस में आपकी रिपोर्ट में क्या बेसिकली यू विल मेंशन दैट the criteria or refers to the criteria that is included in the subject matter presentation. Identify relevant responsibilities in which inform the intended user that the practitioner party is responsible for the underlying subject matter, and the accountant role is to identify, independently express an opinion about it. A description of the nature of an assertion based examination engagement. So it involves examining evidence about the subject matter. The accountant make an assertion of the risk of material misstatement but does not express an opinion on the effectiveness of internal control. सो आपको मेंशन करके चलना पड़ेगा कि क्या सब्जेक्ट मैटर है बेसिकली, और उसके अगेंस्ट आप क्या कर रहे हो, कोई लाइक इंटरनल कंट्रोल्स पे कोई ओपिनियन दे के नहीं चल रहे, आपके नेचर, एक्सटेंड, टाइमिंग, प्रोसीजर्स जो भी आपने लाइक जो भी रिलेटेड प्रोसीजर्स फॉलो किए गए हैं. द अकाउंटेंट में डिसाइड टू फुली डिस्क्राइब द अकाउंटेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज. May request to provide in a separate section the procedure, perform and result thereof. So you need to mention the जो भी आप प्रोसीजर्स परफॉर्म करके चल रहे हो. ठीक है. एथिकल रिक्वायरमेंट कि आप इंडिपेंडेंट हो या नहीं, लाइक यू आर फॉलोइंग द स्टैंडर्ड्स और नॉट. इनहेरेंट लिमिटेशंस. ओपिनियन पैराग्राफ टू कन्वे की फाइंडिंग. सो एग्जामिनेशन है तो ओपिनियन तो देना पड़ेगा, सो उस केस में आपको ओपिनियन पैराग्राफ इंक्लूड करना पड़ेगा. और देन साइन और सिटी स्टेट डेट. सो ये है आपकी बेसिकली एग्जामिनेशन रिपोर्ट. सो आपकी मतलब बेसिक फॉर्मेट सेम रहेगा, बस यू नीड टू चेंज द कंटेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोफोमा है या प्रोस्पेक्टिव है या आपकी कोई और सब्जेक्ट मैटर है. ठीक है. हाँ हाँ आपका टाइटल आ जाएगा, एड्रेस ही आ जाएगा. देन आप मेंशन करोगे कि जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर या फाइनेंशियल्स है उसका पीरियड. ठीक है. उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबल पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग दैट यू आर गिविंग, दैट यू आर फॉलोइंग दी स्टैंडर्ड्स, यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर गिविंग रीजनेबल एश्योरेंस. ठीक है. आपकी कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस आ जाएंगी. एडिशनल पैराग्राफ आप इंक्लूड कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन मैटर्स, कि अगर आप उसे फेजेस में या अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करना चाहते हो तो. नेक्स्ट ओपिनियन सेक्शन आपका यहाँ लास्ट में रहता है, चाहे रिव्यू हो चाहे ओपिनियन एग्जामिनेशन रिपोर्ट में. यस, रिव्यू में भी ठीक है. चाहे वो सार स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप कर रहे हो तभी भी ये ओपिनियन सेक्शन नीचे आ जाता है आपका. ओके. So while a standard unmodified report is reflected above, the accountant may issue other report as warranted, such as report on which the practitioner examine management assertion and the report directly on the subject matter. Report restricted to the specified parties, qualified opinion report or disclaimers because of the scope limitation report. ठीक है. तो आप बेसिकली अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हो, आप सब क्वालिफाइड दे सकते हो, डिस्क्लेमर दे सकते हो. डिपेंड करता है आपकी क्या स्कोप लिमिटेशंस हैं या कोई मिसस्टेटमेंट्स हैं. क्लियर? हाँ क्लियर. ओके. सो डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्या होता है कि जब आपको कोई रिटर्न में असर्शन नहीं मिल रही मैनेज रिस्पॉन्सिबल पार्टी से, ठीक है, उस आपको कोई असर्शन नहीं दी गई, यू आर जस्ट एग्जामिनिंग द सब्जेक्ट मैटर गिवन बाय द रिस्पॉन्सिबल पार्टीज. जबकि असर्शन बेस्ड में वो एक असर्शन देके चलते हैं, क्राइटेरिया देके चलते हैं कि यस दे हैव प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया और दे हैव इवेल्युएटेड अगेंस्ट दिस क्राइटेरिया. लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा, तो उसके केस में रिपोर्ट आपकी सेम ही रहेगी, बस आपकी जो भी असर्शन रिगार्डिंग थिंग्स हैं वो डिलीट हो जाएंगी. ठीक है. नहीं समझा, अब वापस एक्सप्लेन करना. जैसे हमने इसमें मेंशन करके चले थे ना कि असर्शन रिगार्डिंग थिंग्स की, आपकी जो भी असर्शन बेस्ड एग्जामिनेशन रिगार्डिंग थिंग्स है, ठीक है, यहाँ पर वो असर्शंस तो है नहीं,
तो आपकी वो चीजें डिलीट हो जाएंगी. यू जस्ट नीड टू मेंशन द डायरेक्ट एग्जामिनेशन एंगेजमेंट की आपको डिस्क्रिप्शन मेंशन करनी पड़ेगी. ओके. क्लियर? हाँ. बाकी आपकी रिपोर्ट सेम ही रहेगी. ओपिनियन इसमें भी आप देकर चलते हो. So first you will identify the subject matter. Subject matter आपका उसका पीरियड क्या है. यू आर मेंशनिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन आपने कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो किए हैं. आप रीजनेबल एश्योरेंस देकर चल रहे हो विच इज अ हाई लेवल एश्योरेंस. ठीक है. और आपकी लाइक बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लिमिटेशंस आ जाएंगी. आपकी आपकी इंडिपेंडेंट रिगार्डिंग थिंग्स आ जाएंगी और आपका ओपिनियन सेक्शन आ जाएगा. ओके. क्लियर? हाँ. अदर रिपोर्टिंग मैटर्स में बेसिकली क्या है कि व्हेन यू आर रिस्ट्रिक्टिंग योर रिपोर्ट, सो इफ यू वांट टू रिस्ट्रिक्ट योर रिपोर्ट टू ओनली टू द स्पेसिफाइड पार्टी, यू कैन like clearly indicate in your report. Or you can also like modify this report if you want to change your opinion. कि अगर आप अपना opinion change करना चाहते हो basically कि आपको कोई problem दिखी है, आपको सब कोई evidences proper नहीं मिले, तो उस केस में you can change your opinion to qualified, adverse, disclaimer. ठीक है. डिपेंड करता है कि हाँ. circumstance पे. समझा. नेक्स्ट आता है आपके एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स. तो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में हम डिस्कस कर चुके हैं. इसमें अब आपको कोई ओपिनियन नहीं देना. यू जस्ट नीड टू रिपोर्ट योर फाइंडिंग्स इन योर रिपोर्ट. ठीक है. आपके इसमें जस्ट आपके जो भी प्रोसीजर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल पार्टीज और प्रैक्टिशनर एग्रीड होने चाहिए दोनों उस प्रोसीजर्स पे. और वो प्रोसीजर्स के फॉलो करके जो भी फाइंडिंग्स मिली हैं यू नीड टू रिपोर्ट इन योर रिपोर्ट. ओके. Yes. The practitioner may perform agreed upon procedure, but आपको independent होना जरूरी है. The party wishing to engage the practitioner is responsible for subject matter and had the reasonable basis for providing the written assertion about the subject matter when the nature of the subject matter is such that the responsible party does not otherwise exist. Okay, so you need to take the written acknowledgement कि जो भी वो आपके written assertion regarding subject matter, then the party wishing to engage is not responsible for subject matter but is able to provide the practitioner, the third party responsible for subject matter, provide the practitioner with the evidence that third party responsibility for the subject matter. So basically what they are saying कि then you have to take your written assertion from the responsible party. Okay, कि responsible party आपको written में assertion दे दे कि yes they are responsible for the subject matter. वो नहीं दे रही तो फिर उस केस में आप क्या कर सकते हो. अगर आपकी engaging party different है, जैसे engaging और responsible party दोनों अलग हो सकती हैं हाँ, कि हो जिसने वो सकता है. subject matter बनाया और जो आपको अपॉइंट कर रही है. जैसे मैंने आपको बताया था कि बैंक के पास कोई कंपनी आई अपने फाइनेंशियल्स लेकर. अब बैंक ने क्या किया, एक प्रैक्टिशनर को एंगेज कर दिया कि आप ये जो थर्ड पार्टी की रिपोर्ट है ये चेक करके बताओ ये ठीक है या नहीं है. तो प्रैक्टिशनर क्या हुआ आपका, बेसिकली जो इवेलुएट करने वाला है. बैंक कौन हुआ, जो हाँ. एंगेजिंग पार्टी है, मतलब जिसने उसको हायर किया है. हाँ. और जिसने सब्जेक्ट मैटर बनाया है वो कौन है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी है. तो अगर रिस्पॉन्सिबल पार्टी आपको दे रही है रिटर्न में असर्शन तो डेट इज ओके. अगर रिस्पॉन्सिबल पार्टी नहीं दे रही लेकिन आपकी एंगेजिंग पार्टी दे रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक ले रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो लाइक वो आपको रिटर्न में दे दे असर्शन कि यस जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है वो रिस्पॉन्सिबल है सब्जेक्ट मैटर के लिए, तो भी ओके है. ठीक है, आप एक्सेप्ट कर सकते हो दोनों केसेस में. ओके. मतलब दोनों में से कोई एक अग्री करना चाहिए. यस. अगर इफ अगर सेपरेट है तो, अगर सेपरेट हाँ. नहीं है, मान लो कि वही कंपनी आपको सीधा अपॉइंट कर रही है, तो उस केस में रिस्पॉन्सिबल और एंगेजिंग पार्टी सेम हुई ना, तो फिर उस केस हाँ. में तो उसी से लेनी पड़ेगी, कंपनी से ही रिटर्न असर्शन. अगर इफ वो ना दे तो फिर उस केस में तो स्कोप लिमिटेशन है, आप विड्रॉ कर सकते हो, डिस्क्लेमर दे सकते हो. ओके. ओके, सो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स में
जो भी प्रोसीजर्स हैं वो दोनों पार्टी के बीच में एग्रीड होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो भी आप प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो, यू नीड टू बेसिकली परफॉर्म दिस प्रोसीजर्स टू इवेल्युएट की सब्जेक्ट मैटर आपका इसके बेस पर, क्राइटेरिया के बेस पर है या नहीं, और जो भी फाइंडिंग्स होती हैं यू हैव टू मेंशन इन योर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद मेन क्या आ जाता है आपका यहाँ कि आप ये रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो यूज, क्योंकि ज्यादातर आपकी प्रोसीजर्स ये एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स के केस में कि आपकी सारी सबको तो पता नहीं वो प्रोसीजर्स, तो उस केस में आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो ये रिपोर्ट को। क्लियर? हाँ क्लियर। So the practitioner should establish an understanding with the client regarding the services to be performed. When the practitioner document the understanding through a written communication, such communication should be addressed to the client and in some circumstances all to the specified parties. The procedures agreed upon these may be limited to as extensive. So as I told you that these procedures may not be known by all people. So you can restrict your report. Mere reading of an assertion or specified party. So if you think कि सिर्फ reading की, क्योंकि आप procedures तो mention करके चलते हो, लेकिन सिर्फ procedures से सबको नहीं पता चल सकता इन चीजों के बारे में, तो आप अपनी रिपोर्ट को restrict करके चल सकते हो। ठीक है, हाँ अब एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स में बेसिकली आपकी रिपोर्ट में क्या क्या मेंशन होगा? टाइटल मेंशन होगा, एड्रेसी मेंशन होगा, आपकी स्पेसिफाइड पार्टीज, सब्जेक्ट मैटर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, स्टेटमेंट डेट सब्जेक्ट मैटर जो है रिस्पॉन्सिबल पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेटमेंट कि जो भी प्रोसीजर्स है वो एग्रीड हुआ दोनों पार्टीज के बीच में, आपकी किस लाइक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपकी परफॉर्म हुई है आपकी ये एंगेजमेंट, आपकी स्टेटमेंट की जो प्रोसीजर्स हैं, इज दिस ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सब specified party. So since party is already giving you the procedure, so in that case you have to mention in your report कि yes this is the responsibility of this party, कि आप खुद से procedure perform नहीं कर रहे, कि जो procedures दिए गए हैं वही perform कर रहे हो। आपकी जो भी findings हैं, अगर कोई materiality limits आप mention करना चाहते हो, ठीक है, उसके बाद यू नीड टू मेंशन कि आपकी, क्योंकि यहाँ पर कोई रिव्यू या एग्जामिनेशन नहीं हुआ, सो दैट मींस यू आर नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ एश्योरेंस हियर। आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो रिपोर्ट को, ठीक है, जो भी वेयर एवर applicable your reservation or restriction concerning procedures or findings, where applicable a description of the nature of assistance provided by specialists. So in case if you have appointed some specialists, you need to mention them. Then आपके like signature, date, city, report, sorry, date of report और city and state, वो सब mention करने की जरूरत है आपको। Clear? So practitioner may find a representation letter to be a useful and practical means of obtaining representation from the responsible party. The need for such letter may depend upon the nature of engagement and the specified party. So as I told you that written representation आपके लेकर चलते हो आप, वो अगर आपको रिस्पॉन्सिबल से मिल रही है तो ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं दे रही तो एंगेजिंग पार्टी दे रही है तो भी चलेगा आपका। क्लियर? हाँ क्लियर। अच्छा, अब एग्रीड अपॉन प्रोसीजर मींस जो भी प्रोसीजर्स आपको देते हैं वो आपको एग्रीड करने की जरूरत है। सो बिफोर अ प्रैक्टिशनर हु वाज एंगेज्ड टू परफॉर्म अनदर फॉर्म ऑफ एंगेजमेंट एग्रीड टू चेंज द एंगेजमेंट टू एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। ओके, सो इन केस इफ यू आर चेंजिंग योर लाइक एंगेजमेंट, मान लो आपको एग्जामिनेशन से एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स में बोल दिया, सो एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि जब भी आपको एंगेजमेंट चेंज करने के लिए बोले तो यू नीड टू लाइक कंसीडर कि क्या आपकी जस्टिफिकेशन प्रॉपर है या नहीं, कि रीजन जो दिया गया है चेंज करने का वो प्रॉपर है या नहीं। द पॉसिबिलिटी दैट सर्टेन प्रोसीजर परफॉर्म्ड एज अ पार्ट ऑफ another type of engagement are not appropriate for including in agreed upon procedure engagement. The reason क्या है basically additional effort क्या लगेंगे आपकी ओरिजिनल एंगेजमेंट को कंप्लीट करने के लिए, और इन केस अगर आपको लगता है कि आप
ये चेंज करना चाहते हो और आपकी जनरल से रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी रिपोर्ट, देन द रीजन फॉर चेंजिंग दिस, कि जैसे आपकी ग्रेड अपॉन प्रोसीजर जनरली रेस्ट्रिक्टेड रहती है और आपको पहले एग्जामिनेशन करने के लिए बोला है, तो अब एग्जामिनेशन से रेस्ट्रिक्टेड करने के लिए क्या रीजन दिया गया है? सो बेसिकली जस्टिफिकेशन प्रॉपर है या नहीं है। समझा। So if the specified party acknowledge agreement to the procedure performed to be performed and assume responsible for sufficiency of these procedure to be included in the agreed upon procedure, either of the following would be considered a reasonable basis for the request a change in the engagement. ठीक है, तो अगर आपकी बेसिकली कोई सर्कमस्टांसेस चेंज हुए हैं जिसकी वजह से अब आपके एग्जामिनेशन से रिव्यू बोल दिया गया आपको, या रिव्यू से एग्रीड अपॉन प्रोसीजर बोल दिया, तो अगर वो सर्कमस्टांसेस सपोर्ट कर रहे हैं देन यू कैन एक्सेप्ट द चेंज इन एंगेजमेंट. देन a misunderstanding concerning the nature of the original engagement or available alternatives. So पहले आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी लाइक एंगेजमेंट समझने में, सो इसलिए वो आप चेंज करना चाह रहे हैं. तो अगर आपको मतलब रीजन वैलिड दिख रहा है ओनली देन यू कैन गो फॉर चेंज इन एंगेजमेंट. ओके, हाँ सो ये था आपका रिलेटेड टू अटेस्टेशन. सार स्टैंडर्ड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कंपाइलेशन, प्रिपरेशन और रिव्यू. अब आपकी ये सारी ऑडिट रिपोर्ट्स खत्म हुई. यहाँ पर बहुत सारी हैं, लेकिन बस आपको रिपोर्ट्स मतलब जनरली लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि किस में क्या आता है. क्लियर? हाँ, रिपोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में? आपके लाइक रिपोर्ट रिलेटेड की, जैसे आप रिव्यू में क्या कर रहे हो, कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हो, आप रिव्यू में क्या दे रहे हो, कॉन्फ्यूजन दे रहे हो या ओपिनियन दे रहे हो, या ओके लिमिटेड दे रहे हो, या लाइक रीजनेबल एश्योरेंस देकर चल रहे हो. ठीक है. कंपाइलेशन में बेसिकली कि अगर डिस्क्लोजर्स ओमिटेड हैं तो आप क्या करते हो. सो मेन थिंग्स पूछते हैं, ऐसे इतना डीप में भी नहीं पूछेंगे. आपके ओपिनियन रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं कि आप किस केस में कौन सा ओपिनियन देकर चलोगे. सो आपको ध्यान रखना है कि गैप डिफरेंस है या गैस डिफरेंस है, और अगर परवेसिव है या नहीं है. ओके ठीक है. और उसमें जैसे सार स्टैंडर्ड में आप रिव्यू रिव्यू कर रहे हो, कंपाइलेशन के लिए लाइक कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करोगे. ठीक है. समझा। इसके बाद हम फिर कुछ प्रैक्टिस सेशन रखते हैं. एक बार आपकी गवर्नमेंट ऑडिट भी मतलब, चलो अभी कुछ प्रैक्टिस रख लेंगे, फिर गवर्नमेंट ऑडिट भी करा देंगे, या मैं ही करा दूंगी या सर करा देंगे. ठीक है. ओके इतना रिवाइज कर लेना. आपको कोई डाउट आए तो मुझे बता देना. डन। देन अभी कोई डाउट है आपको? नहीं, अभी तो कोई नहीं है। ओके, देन वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, थैंक यू। ओके, बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट.